अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनु मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमन बेसरों सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे क़ादरियम नाराए या गौसे आदम ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां जिंदाबाद। मसलक सरकार आला आला हज़रत जिंदाबाद। या इलाही मसलक अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो ज़िम्मेदार है सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां जिंदाबाद। हामिल फैज़ रज़ाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahl Bayt Athar, Sahaba Ikram, Khulafa Rashidin, Tabi'in, Tabi'in, A'immai Mujtahidin, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam for affording us with the opportunity to congregate today for the Urs Sarapa Quds of Sayyidi Ala Hadrat Adimul Barkat Imam Ahl Sunnat Ashah Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi radiyallahu ta'ala an. Ala Hadrat Azimul Barkat Imam Ahl Sunnat radiyallahu an is that personality. Ala Hadrat Adimul Barkat radiyallahu an is that great Imam. Ala Hadrat Adimul Barkat radiyallahu an is that great Mujaddid, that if it were not for Sayyidi Ala Hadrat radiyallahu an, then today we would not know the shan of the Sahaba of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Today that we are praising the beloved companions of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam, and we are praising the Ahl Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This is the blessing of Ala Hadrat Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala an. Imam Ahmad Raza radiyallahu an ek zaat hai. Ala Hadrat Adimul Barkat is one personality, magar ye sirf ek zaat nahi hai. He's not just one personality. He's the movement of the ishq of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He's the movement of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ala Hadrat Adimul Barkat ne Bareilly Sharif mein farmaya, yahan toote hue chatai pe baith ke farmaya. He sat on a broken mat and he said, Kilke razae khanjare Bukhan barkabar Aada se keh do khair manaye nashar kare. From Bareilly to Baghdad, from Bareilly to Africa, from Bareilly to America, from Bareilly to Europe, aaj tak sunne mein aa raha hai ki Kilke razae khanjare Bukhan barkabar Aada se keh do khair manaye nashar kare. And this mission of Ala Hadrat, this mission of Ala Hadrat, Bareilly se leke Baghdad tak pahunchane wale, the one who took this mission from here to Africa, from here to Baghdad, from here to Europe, from here to America, is one Zat, Huzur-e-Taj Sharif. He moved the mission of Ala Hadrat. The Arabs learnt in this zamana who is Ala Hadrat from Huzur-e-Taj Sharif, and the people learnt in this zamana who is this personality, what is his maslak. One from Huzur-e-Sayyidi Taj Sharia, one from Huzur-e-Muhaddis-e-Kabir. And today this mission of Ala Hadrat in its pure sense, uske paak tarike se Huzur-e-Sayyidi Qaid-e-Millat is spreading throughout the dunya. Understand and remember, it's very important to know that Ala Hadrat is the recognition. Ala Hadrat is the recognition Turre Imtiyaz. Ala Hadrat is the recognition. Ala Hadrat is all the Sunnis' identification. Ala Hadrat against the Wahhabis, against the Rawdis, against the Najdis, against the Maulais, against the Sulh-e-Kullis, the sign and the protection and the shield is Bareilly's Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala an. You must understand that in this zamana, agar iman bachana hai,
हाँ हाँ इफ यू वांट, देखो मैं अफ्रीका का हूं, आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मेरी पैदाइश वहां की है, मगर हम लोगों को घुट्टी में पिला दी गई कि आला हजरत, आला हजरत। वी हैव बीन टॉट एवरीथिंग इज आला हजरत। Whoever left the road of आला हजरत गुमराह होके रह गया। He went astray and whoever held to आला हजरत, उसी को ताज शरिया ने अपने दामन में ले लिया। हुजूर ताज शरिया took him in his daman. Today, if you want to see the power of Bareilly, look at it in हुजूर कायद मिल्लत। If you want to see the power of Bareilly, look at it in हुजूर मुहद्दिस कबीर। Look at the stage. This is not an ordinary stage. ये एक आम मिंबर नहीं है, ये इश्क रसूल के जलवे मौजूद है। The signs of the love of Rasulullah are present here. This is that Ala Hazrat. This is that Imam Ahmad Raza, concerning whom the beautiful Khalifa of Ala Hazrat Azimul Barakat, Mufti Mahmud Jan Peshawari radiallahu anh, beautifully said. What did he say? Haq Ta'ala ki qasam Ahmad Raza. Haq Ta'ala ki qasam Ahmad Raza. Naibe Khairul Wara dekha tujhe. Indeed, Ala Hazrat is the envoy, the representative, and the true and the most pure in this zamana, the missionary, the emissary of Ala Hazrat Azimul Barakat radiyallahu ta'ala. Ala Hazrat Azimul Barakat. Remember one thing. एक बात याद रखिए और इसी पे मैं खत्म करता हूं। बुजुर्गान दीन मौजूद है, बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद है। हम लोगों को दो लफ्ज कहने का मौका मिलता है, ये सरकार ताज शरिया का करम है। आज मैं हुजूर कायद मिल्लत को स्टेज पे जब चढ़ते हुए देखा तो मैंने हजरत मुफ्ती अबू यूसुफ से फरमाया कि चश्मे पहने हुए हजरत जब चल रहे, मुझे अपने मुर्शिद की याद आ रही थी, हुजूर ताज शरिया की याद आ रही थी। इफ यू वांट टू सी ताज शरिया, हुजूर सैयदी कायद मिल्लत को देखो, उनके हाथ पे बैठ करो, उनके खिदमत में रहो, ईमान बच जाएगा, ईमान की हिफाजत होगी। इफ यू वांट प्रोटेक्शन, होल्ड ऑन टू हुजूर मुहद्दिस कबीर, होल्ड ऑन टू हुजूर कायद मिल्लत, और होल्ड ऑन टू बरेली शरीफ, क्योंकि बरेली शरीफ was the markaz yesterday. Bareilly Sharif is the markaz today, and the Bareilly Sharif will give the markaz tomorrow also. Why? Because the markaz is not the building, the markaz is not the shop, the markaz is not everything else. The markaz is Ala Hazrat Azimul Barakat radiyallahu ta'ala. Hold this manner, stay on this manner, inshallah you will be successful here, you will be successful in the hereafter. Allah Ta'ala हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए और हम लोग को मसले के आला पर सख्ती से कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।